Good afternoon and welcome to Housing's Mega Home Utsav. Good afternoon, Mr. Chatterjee. Good afternoon, Kashyap. Kashyap, to my all the participants today, to all the viewers of Housing.com, this is one of the webinars जो हम आज arrange कर रहे हैं. During this Mega Home Utsav period that has started at the 7th of October and will continue till the 15th of November, आप सारे व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है आप housing.com पे आए और ऐसे बहुत सारे जो वेबिनार्स लाइव ऑनलाइन वीडियो टूर्स जैसे हम होस्ट कर रहे हैं विद वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी डीलर्स प्रॉपर्टी डेवलपर्स एक्सेट्रा इन सब के साथ हम जो कनेक्ट करवा रहे हैं आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा रहे हैं इसमें आपको असिस्टेंस मिलेगा सो वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी आज हमारे साथ उमंग प्रॉपर्टीज से कश्यप ज्वाइन किए हैं एंड कश्यप आई वुड रिक्वेस्ट आप हमारे व्यूअर्स को अगर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दैट वुड बी वंडरफुल Sure. So, namaskar and good afternoon, everybody. This is Kashyap, and I'm speaking on behalf of Umang Properties. I have been associated with this organization for over a month, and I'm assisting them in marketing and branding Umang Properties, which is a 5-year-old, premium real estate organization, and trying to take it to the next level. This organization is a niche organization which is managed by its founders, Mr. Vijay Kesarwani and Mr. Hitesh Patil. They are the original founders of this organization. And to my surprise, they have closed 500 deals, housing deals in the last 5 years. That's USP by itself, why I'm associated with them. And that's about it for now. Yeah. Great. Thank you so much, Kashyap. So, जैसे कि आपने सुना कि उमंग Properties is one of the most prominent property dealers in the Virar region. Now, before we get into any further details and we start a conversation with Kashyap ji about understanding the property, the location, सारे information जो एक property seeker को चाहिए होता है, that we will discuss on this webinar. Before we get to that, I would urge all of you, whoever is joining now, आपके कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी questions हो, please write it in the Q&A section. We will try to answer all of your questions during this webinar. अगर कोई भी questions छूट जाता है, we will have a second round of discussion जहाँ पे हम आपके साथ contact numbers share करेंगे, information share करेंगे, जिसके जरिए आप directly communicate कर सकते हैं उमंग Properties के साथ and आपके conversation आगे बढ़ा सकते हैं. So, Kashyap ji, the first question that comes to anyone's mind is अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से सोचूं या फिर मैं प्रॉपर्टी खरीद के रेजिडेंशियल पर्पस से सोचूं, व्हाई विरार? विरार क्यों? देखिए, विरार has got a USP of its own, and in Virar the biggest project or the biggest township आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो रुस्तम जी एवरशाइन ग्लोबल सिटी है. इसमें 75% ठीक है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सेगमेंट में आते हैं 30 लाख से लेके 60 लाख के करीब में. और अगर आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं फिलहाल वो लगभग एनीवेयर बिटवीन 4,000 से लेके 6,500 के स्क्वायर फीट में रिफ्लेक्ट करते हैं. और एवरेज प्राइसिंग अगर आप देखोगे इस प्रॉपर्टीज की तो इट्स एनीवेयर अप टू 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. एंड ऐसा है कि ये अट्रैक्टिव कैपिटल अप्रिशिएशन ऑफ मनी है. अगर आप देखोगे तो इस प्रोजेक्ट्स के बारे में तो 4 साल से पहले अगर 4 साल की आप हिस्ट्री देखेंगे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ली है रेजिडेंशियल फॉर सेल्फ यूज देखिए, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस देखिए, तो उनका जो अप्रिसिएशन हुआ है दैट हैज बीन एनीवेयर बिटवीन 12 to 14% अप्रोक्सीमेटली. तो जो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बोली या कमर्शियल प्रॉपर्टीज बोली, यहाँ पे जिन लोगों ने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले तो 4 साल के ड्यूरेशन में जिन्होंने यहाँ पे पैसे लगा के इन्वेस्ट किया है, खुद के लिए दिया है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दिया है, तो उनका जो कैपिटल है इट हैज अप्रिशिएटेड बाय एनीवेयर बिटवीन 12 to 14%. और अगले 3 से 4 साल में ठीक है पोस्ट कोविड के ड्यूरेशन में इफ यू सी 18 से 25% तक उसकी और बढ़ोतरी हो जाएगी. क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी विरार एज सच इसका यूएसपी है कि इट्स अ बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट with apartments, with modern amenities, and it has got attractive returns on the real estate over the last 5 years. It has proved for itself. Right. The statistics जो हैं ये खुद के लिए
बयान करती है कि भाई जिन्होंने 5-4 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है उनका क्या बेनिफिट हुआ। राइट, एब्सोल्युटली। कश्यप जी, ऐसा भी है कि व्हेन यू गो टुवर्ड्स विरार साइड, उस हम्म, रीजन में, इट्स नॉट ओनली अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी बट आल्सो यू गेट टू लिव विद सम ग्रीनरी। जैसे कि एब्सोल्युटली। आप अगर मुंबई सबर्ब्स में देखें, जैसे अंधेरी हो गया, या आप बांद्रा साइड पे देख लो, वहां पे मतलब वी डोंट हैव स्पेस, और घर मतलब एक दूसरे से लगे हुए हैं। विरार में यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ लाइफ, अ लॉट ऑफ ग्रीनरी स्पेसेस। आप इस बारे में व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यू? Sure. Now, if you see, Virar is such is a green belt, right? The Palghar district is a green belt. You got flora, you got fauna, you got mountain scenery, you got the sea water, you got so you get an ample of fresh, ample of fresh agricultural produce as well as a commercial setup on the background of it. Perfect, If you perfect, see, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो major players are there, who have taken up developing this place into a mega residential township. Developers such as Shapurji, Palunji, Rustamji developers, Agarwal developers are there, Ekta developers, Sridhar developers, Cosmos Group, Viva Group, and HDIL and Evershine developers. They are the major key players in developing this property, who have also been associated with Rustamji in the past in identifying these segments and the areas. So absolutely. the air quality here, if you see from a greenery perspective, say when you wake up in the morning, सवेरे जब आप उठते हो तो आपको एक ब्यूटीफुल सनराइज का व्यू मिलता है। आप अगर सनराइज देखते हो और सनसेट भी देखते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार सनराइज है या सनसेट है, बिकॉज इतना क्लैरिटी होता है। So you cannot distinguish between the sunrise and sunset. It's only that based on the direction that you're standing, you know that yes, this is the east and that's the west. I understand. That is a fantastic. I mean, that is Yeah, one of the very strong points, because true. लोग जहाँ पे रहना चाहते हैं, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग सोचे तो they want these things, because True. a very stressed life we all have, business related, job related. But when we come back home, we want that calm, that soothing effect of that house. So that is one of the major USPs. Moving on to the next point, Kashyapji, what about commuting to Virar? Sure. What are the options? Now, if you see the options that are currently available, is you have the local train. Okay, that is one way. It is you have the local train, which is again, if you see, there are 4 tracks that ply right from Palghar, and that also start from Virar to Andheri, Virar to Borivali, Virar to Churchgate, Virar to Dadar. So you have ample of trains that are plying. The next USP is its connectivity from the highway perspective. So if you see from the airport perspective from Andheri, if you see from Borivali, from the Western Express Highway, your travel journey is anywhere under than 40 minutes by road. If you take Wonderful. Ghodbandar section, and if you want to go to the Thane, to the central area also, that connectivity is also anywhere under 40-45 minutes. तो Right. 45 मिनट के अंदर आप थाने भी पहुंच सकते हो, 45 मिनट के अंदर आप अंधेरी तक भी पहुंच सकते हो by road. And that expressway is there. So that is one of the standard things that are there. अगर आप आगे जाके सोच रहे हैं कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या है, so then as you सब व्यूअर्स को तो पता ही रहेगा कि यहाँ पे एक प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जैसा as suggested by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, which is a collaboration with the Japanese government, कि यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन का जो है मुंबई टू अहमदाबाद ये स्टार्ट होने वाला है। तो विरार is going to be a proposed station on one of those proposed 12th station. तो विरार जो है ये proposed 12th station रहेगा जहाँ पे बुलेट ट्रेन रुकेगी, and then it can facilitate faster travel also for those executives जिनको बहुत जल्दी पहुंचना है, ठीक है। Also दूसरी जगह से अगर आप देखोगे तो जो मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है विरार टू अलीबाग, आज की तारीख में आपको अगर अलीबाग जाना है तो you have to have multiple transportation methods. Right. But Virar to Alibag corridor project जो है, this is a proposed corridor project, and it is a combination of metro and roads from Alibag to Virar. So that's also one more project which is extended up to Virar. This is as per the government's plan. Fantastic. Right. Next वाला अगर आप देखोगे तो मेट्रो 9 जो लाइन है, ठीक है, मेट्रो 9 की, तो दहीसर मीरा रोड it is already planned. Now this extension to Virar will support for the more commutation, ease of travel. तो लोगों को और आसानी होगी, ये मेट्रो लाइन 9 जब चालू होगी
तो और आसानी होगी कम्यूट करने में, और आसान होगी ट्रैवलिंग में। तो Right. ये एडिशनल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें मिल रहा है सरकार की तरफ से, उनके प्रोजेक्ट्स की तरफ से, यहाँ से और आसानी हो जाएगी, और ट्रैवल टाइम कट आउट हो जाएगा, और ज्यादा लोग ट्रैवल कर पाएंगे, ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। Absolutely. और Absolutely. अगर आप विरार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखोगे, ये टाउनशिप के बाजू में, आजू बाजू में, या अराउंड दिस बिल्डिंग्स, अगर आप देखोगे तो a person doesn't have to leave the complex or the township to go for necessities. Right. Necessities जैसे कि अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, educational institutes हैं. So you have the famous, reputed schools such as Saint Xavier's High School. Then you have the National English High School. You have Rustamji International School यहाँ पे, Experts International High School and Junior College, Matrix Academy है, CPSE schools है, Viva College of School, Commerce and Arts. You have multi-specialty hospitals such as Sayog Hospital and Research Center, Global Hospital, Highway Hospital. You have shopping attractions such as Big Bazaar, डी मार्ट है यहाँ पे, फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और सबसे जो बड़ी बात यहाँ की अट्रैक्शन है, ये है याजू अम्यूजमेंट पार्क एंड क्लब वन। अगर आप देखोगे, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क्स इन मुंबई। इफ यू सी, you have got like swimming pool facilities, you've got basketball, you can play tennis, you can and a host lot of facilities out here. Correct. So to my viewers, as Kashyap ji मैं explain करे बारीकी से हर एक important factor को, I would also like to highlight कि आगे चल के once the metro thing is done, जो commute आज आप local use करके भी आप करते हो, तो आधे घंटे 1 घंटे में आप करते हो, वो timing और कम होने वाला है। And also the traveling is going to become much more comfortable because जो लोकल में मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ है वो थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाएगा मेट्रो एंड लोकल्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू ड्राइव फ्रॉम विरार अप अंटिल यू कम टुवर्ड्स मलाड, गोरेगांव, आपको कोई ट्रैफिक मिलेगा नहीं, तब तक पूरा रोड खाली आपको मिलेगा। सो वो जो लेंथ है उसको कवर करने में आपको कम से कम टाइम लग सकता है। Those are the commuting strategies that we have, and of course future infrastructures are already worked on. And one of the most important thing is the government's focus is in developing this area. So therefore, all the facilities required, all the infrastructure from governments and all the permissions, they have been much sooner. Correct me if I'm wrong, Kashyap ji. यहाँ पे आपके सारे सर्टिफिकेशन, सारे प्रोसेसेस जो गवर्नमेंट के, उनका स्पीड काफी हाई होता है बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस भी इस एरिया को डेवलप करने में। Absolutely. अगर आप देखोगे तो like if you see, there is nothing like a stopper that is coming from the government side. They are trying to fasten up every process, every approvals for releasing the apartments, for giving the possession to the people, from going ahead and fixing up the infrastructure that is required. तो यहाँ अगर आप देखोगे कि कोई भी अगर एक समस्या भी या कंप्लेन भी आती है, तो लाइक बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको सॉर्ट आउट करने में। Absolutely. At a local mayor's level, at a local municipal level, to a district level, to a collector's level. So there are different hierarchies that would come in, obviously, but everyone gets involved to do the resolutions. Wonderful. कश्यप जी ने हमें ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपको अपने बिल्डिंग का जो सोसाइटी है उसी स्ट्रक्चर को निकल के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके सारे ग्रोसरीज के चीजें, आप यू हैव हॉस्पिटल्स देयर, shopping malls over there, amusement parks over there, especially schools and colleges. So जो especially जो family people होते हैं जिनके घर में बच्चे हैं या aged लोग हैं, उनको ये चीजें ज्यादा सोचनी पड़ती है because people like you and me, Kashyap ji, probably will think about commuting to office. हमारा मेजर फोकस वो रहेगा, लेकिन द वाइफ्स, द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स इन द हाउस, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। सो वो चीज भी आपने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया कि there is immense number of hospitals and schools and colleges which makes this area itself, this region itself, a residential area. Residential area, absolutely. The next point that we have for people with families, एक जो बहुत genuine question आता है, how about the security and the safety of that area? Right. Now, in terms of security and safety, if you see the township itself is under 2 kilometers from the main central Virar station, point 1. In the vicinity itself, you have the police stations that are required. You have fire stations that are required. You have the emergency medical services unit.
EMTs that are required. In terms of, again, if you see from a safety perspective, we haven't come across any kind of people. If you see, I've been here for quite some time now, that I see, I can see families who are going up about on the roads. I can see single women walking around. I can see kids and aged people also traveling in autos, traveling in buses, or whatever methods they are traveling. It seems quite secure and safe from that perspective. There is no incident like any person, even a foreigner, probably can take a stroll or a walk for about Absolutely. uh, Absolutely. 3 to 4 kilometers, and nothing would happen, because the township is so big. The class of people here, if you see, right, so it's not like you're in some gangsters land or something. It's nothing like that. It's a civilized township of people that are Right. here, And I and think that is everyone. one of Yeah, the strong reasons is Kashyapji, because we have a lot of service level families living here, exactly, which exactly. actually makes this very homely, True, because true. we all the service level people have similar kind of mindset. So they're focused on their family, their children growing up. So the entire place becomes very homely. That is another very important point that True, our true. viewers wanted to know about. Before we move on to anything important, anything further, one last question about the location, Kashyapji, is what about recreation? What about if people who are staying there, they want to go for a one-day picnic or a night over to somewhere? What are the things Mhm. that you can suggest? Okay, now Virar as such, if you see the township, if you see the Rustomjee Evershine Global City, it is surrounded by different recreational spots. First and foremost is for those who want just to go ahead and have got an hour's breather in between, and want to take a recreation. There's definitely the Yazoo Park. There's Club One, where they can eat, dine, play, swim, and enjoy any of the indoor or outdoor sports. Right, right. Apart from these sports and these indoor kind of recreational activities, which are within the जो रुस्तम जी एवरशन पार्क में है, अगर Ji. उनको एक दिन के आउटिंग या 2 दिन के आउटिंग भी करना है, तो Ji. like you have temples also around here. From, if you want to take a religious tour, you have the Jivdhani temple. Some people like to go there. Fantastic. If you have if you want, there's a Ganesha temple also out here, and there are different temples that are out here from a religious tour perspective. Correct. If you want, there are a lot of churches also. For those who want to go to churches, those who want to go to masjids, they have a lot of masjids, so that is not a problem from All that is taken care all of. that is taken care of. Next level of recreation, अगर आप देख रहे हो कि अगर आपको सी शोर पे जाना है, किसी रिसोर्ट पे जाना है, ये ये टाउनशिप छोड़ के चलो एक दिन आउटिंग करना है, तो काफी अच्छे रिसोर्ट्स है बोलिंस में, फिर अरनाला में, फिर रजौरी है, फिर you have Kalam. So there are 7 to 8 beaches around this place. Nice. Different spots with different resorts, with different swimming pools, and different entertainment packages are there in any of these. So a Fantastic. person can take his family and go to any of these resorts, any of these places. And still more than that, if you want to see the heritage side of it, heritage heritage tours अगर आप देखना चाहते हो, so from Virar you can go to places like Arnala Fort, you Yes. can go to Vasai Fort, you can go to Bhautsa Dhakka, which is near the highway side. You Ji. can go to Tungareshwar for hiking. You even have paradiving and skydiving facilities here, which are just about half an hour drive from the Rustomjee Evershine city. So there you have a club which conducts paradiving, skydiving, sessions. So those who are interested in, going for that glider sessions and, enjoying the weekend, and who are really adventurous, they can go for that. Those who are interested for a trekking, you have got the famous Tungareshwar Hills. You can trek that mountain up and down. Those who are interested in seeing waterfalls can go to Chinchoti waterfalls. So the kind of recreational avenues are unlimited outside the complex and within the complex as well. Fantastic. Fantastic. Thank you very much, Kashyapji. Sure. So to my viewers, we discussed the location in such details because we understand that when a person is ready to invest in any property, the first thing that comes to their mind is they want to know each and everything about the location. So the next thing that we will move on to is a one-of-a-kind support that we are providing to our viewers. आज की डेट पे especially during the lockdown we realized the toughest thing was to meet the property dealers or the developers
and see the properties, because kahin kahin pe there were places that were locked. Commute was almost impossible. हालांकि अभी चीजें बेहतर हो रही है. Keeping all of this in mind, what housing has come up with are live digital tours of properties. Such a tour will be shown to you right now in just about a while. So before we start that, कश्यप जी, आज जो प्रॉपर्टी हम अपने व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस लोकेलिटी के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करें. Sure. So in this wonderful township of Rustamji Evershine Global City, we have an amazing property that is known as Garden Avenue K, constructed by Sridat Developers, and the owner of this project is Mr. Chirag Mehta. Okay, just to tell you a brief about it. जी. And if you see this project itself, it has got it's principally 14 stories high, and it has got 10 wings. And this project has started sometime back, say around in 2013-14. And as of now, we have given a position of around about say 7 wings. Position has been given to the customers. You're saying out of 10, 7 already possessions are Already, started? yeah, already positions have been started and delivered to the customers, and the balance three are to be delivered by December 2021. Now, to see the setup of this property itself of Garden Avenue K, it is centrally located in the Rustamji Evershine city. You have got from a commutation perspective, यहाँ पे you have public transport भी है, rickshaw stands भी है. It is schools के नजदीक है, colleges के नजदीक है, hospitals के नजदीक है, big bazaar के नजदीक है. यहाँ पे आपको मैकडी भी मिलेगा, आपको KFC भी मिलेगा, आपको पिज़्ज़ा हट भी मिलेगा. यहाँ पे आपको एक ब्यूटिशियंस के पास भी है, डिजाइनर्स के पास भी है. So it's all so basically one central requirement location. Exactly, central location है. all सारे facilities जो एक residential family को required हो सकती है, वो सारे already आसपास available है. Already आसपास है. Fantastic. Point 1. Point 2, अगर आप देखोगे from a very strong perspective, the approach to the property. Approach to the property is यहाँ पे के जो roads हैं, they are very wide. It's like a 60 feet road on either side. So the approach जो है, अगर आप देखोगे कि किसी भी property का approach अगर आप देखोगे तो clear approach है. आप कार से भी आ सकते हो, आप बड़े vehicle बस से भी आ सकते हो, private luxury coach से भी आ सकते हो यहाँ पे. So there is nothing like you have to drive through small lanes. ऐसा lane वेन का रास्ता नहीं है. बड़ा अच्छा खासा जो सिटी में आपको रोड्स मिलते हैं, शायद उसी रोड्स के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे. And public transport भी available है. Public transport, rickshaw भी हैं, buses भी हैं यहाँ पे. Fantastic. So to my viewers, let me start sharing certain details about the project. Of course, कश्यप जी मुझे assist करेंगे, वो थोड़ा explain करेंगे कि इस project के बारे में सब कुछ. But I want my viewers to have a look at what we are discussing. So this is, as you can understand, the look of the project. So Kashyap ji, I think this is the entrance image. This is the entrance. हाँ जी, ये entrance in sense, this is you're standing in the center of the play area, and you're surrounded by the building infrastructure. Fantastic. ठीक है. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो पोडियम लेवल पे है, ठीक है, यहाँ वो रहा आपका मेन एंट्रेंस. जैसे आप एंटर करते हो, यहाँ पे एक छोटा सा रिक्रिएशन एरिया है फॉर विद इन द कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ, जहाँ छोटे बच्चे जो हैं who parents cannot take, you can say toddlers area जैसा आप बोल सकते हो, senior citizens area. So for them a small recreation area is created out here, or even for your small community gathering you can use it. Fantastic. Apart from this, अगर आप देखोगे तो ये बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो फैसिलिटीज जैसे कि इंटरनल एरिया में यहाँ पे क्लब हाउस है. तो अगर आप थोड़ा आगे जाते हो तो वहाँ पे लॉबी से तो वहाँ पे आप एक ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे exactly ये क्लब हाउस है. राइट. सो दिस इज द लॉबी, और यहीं पे आपको आपका क्लब हाउस भी मिल जाएगा, which can of course be used for any personal thing, approvals लेके भी आपके family gatherings वगैरह भी आप कर सकते हो. Exactly. So if you want to have maybe your birthday party, maybe your kitty party, maybe अगर आपको tea party रखनी है, थोड़े दोस्तों को बुलाना है, तो आप बिल्डिंग का जो या सोसाइटी को छोटा सा एक फंक्शन रखना है मेंबर्स के लिए, तो वो आप वहीं पे भी यूज कर सकते हैं. साथ में उसमें आपको एक जिम भी मिलेगी, ठीक है. यहाँ पे you can do a small workout, so people who do not want to go to the major club house जो है वो इस चीजों का फायदा उठा सकते हैं. Fantastic.
कश्यप जी, हाँ जी। इस पर टावर अपने एलिवेटर्स कितने, लिफ्ट्स कितने हैं, अगर आप बता दें। Sure, definitely. So यहाँ पे basically if you see there are about three elevators as such, ठीक है, in the 14 towers building, ठीक है. So there are two for the passengers and one woods there which is proposed for the what do you say, for the service elevator which is Service proposed elevators. service. Right. Yeah, Okay. that is Okay. kind of a proposed as of now. But these two elevators are that can definitely go ahead and take about 10 to 10 people as such at a time, Right. more than 10 people at a time. Very, very, So very standard. configuration. Yes, absolutely. Yeah, Thank you very much for that. So, Kashyap ji, if this is the entrance of the apartment जो हम आज अपने viewers को दिखा रहे हैं, तो sure. ये कौन से floor पे हम दिखा रहे हैं? So basically, we are going ahead and showing this on the second floor of the building as such. Second floor Okay. पे जो है, ठीक है, and it's going to be a standard 1 BHK configuration जो हम आज दिखा रहे हैं हमारे viewers को. Fantastic. And एक एक फ्लोर में कश्यप जी कितने यूनिट्स है, कितने अपार्टमेंट्स है? हर फ्लोर में अगर आप देखोगे तो 6 यूनिट्स रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 BHK एंड 2 BHK. Fantastic. But I can also show my viewers कि जो आपका कॉमन स्पेस है, हाँ जो जी. आपका फ्लैट के बाहर का जो स्पेस है, वो भी काफी स्प्रेड आउट है. यहाँ पे भी आप काफी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जब घर पे गेस्ट्स वगैरह आए, या फिर अ लिटिल ब्रीदिंग स्पेस आउटसाइड द डोर. आई कैन सी कि यहाँ पे काफी स्पेस है. स्टेयरकेस भी काफी वाइड है फॉर पीपल टू टेक स्टेयर्स इफ दे वांट टू. So this can also be one of the important aspects for people to consider this apartment. क्योंकि Absolutely. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं कि दरवाजे जो है एकदम, ये जो आपने दरवाजों का गैप बीच में रखा है, ये गैप भी नहीं मिलता है. एंड यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं, यू कैन सी दैट यू हैव योर ओन प्रिवेसी. आपको अपनी प्रिवेसी मिलती है. इट्स अ लॉन्ग हॉल वॉक जिसमें आपको, यू कैन use that area as well. You can have your place for this thing. And let me take my viewers inside the apartment now. Sure, absolutely. ये है हमारा living room. So of course this apartment is under construction, but this gives my viewers a fantastic idea about what we're talking about. क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ कश्यप जी, ऑलमोस्ट इस अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो ही चुका है. जी. फाइनल टचअप्स आई थिंक बाकी है. तो हाँ जी, अगर हाँ जी. थोड़ा बहुत आप इस लिविंग रूम के साइज वगैरह के बारे में बता दें, या कौन से साइड फेसिंग हाँ है? जी. So basically, this is an apartment which is like a south-facing apartment. Okay. Right now, in this apartment, if you see, you have got a configuration of a 1 BHK, which is a standard 1 BHK. इसमें आपको carpet area जो है वो anywhere between like say about 380 square feet का जो है standard का रेरा carpet area रहेगा ये. Right. ठीक है. And if you see यहाँ पे आपको अगर आप थोड़ा अंदर जाओगे तो like this is a dry area space near the window where you get a small kind of semi kind of a balcony out Right. here. Correct. Okay, then you have, this is the main living room area. जी. Now if you see this is a semi furnished apartment which is in progress. So when I say semi furnished is you get all the basic necessities that are fixed by the builder, such as door frames, you get tiles, you get electrical fittings, that is the Right. sockets and all, you get Right. provisions for your internet cables, switchboards. So all the basic you can say semi-furnished requirements to keep your structure ready is provided by the builder. And Kashyap ji, I'm assuming the apartments have been prepared considering Vastu as well. Absolutely, they are Vastu compliant, and we have got different configurations depending upon the Vastu parameters. Wonderful. So yes, we have got east-facing apartments, we have got west-facing, we have got south-facing, we have got northeast, northwest. So it depends upon every Vastu requirement as per the person, as per the family that is buying, as per their Vastu requirement, everything is taken care of. Fantastic. So this room can be used for living and dining. To Yes. all my viewers, आपके discussion पे आप कैसे करना चाहते हैं. Then we have this passage. जिस passage पे आपको left side पे दिखेगा आपका kitchen. Yeah, this is the kitchen that we have. So Kashyap ji, one good thing that I see in the kitchen is कि आप double slab रखे हुए इसको.
Yes, So absolutely. that becomes very helpful for, I mean, a lot of women who are watching us will accept this thing, because one slab पे बहुत ज़्यादा difficulty हो जाती है, so that can True. actually be taken care of. And I can see कि ये आपने ये वाला जगह जो है फ्रिज के लिए सेटअप करके ही रखा हुआ है. Sure, sure. And I'm sure the plug points and electricals will be taken care of. यहाँ पे गैस सिलेंडर लाइन मुझे दिख रहा है, सिंक over here. And I think ये आपका ड्राई बालकनी है. Dry balcony hai, exactly. Right, So if you right. go out here, like, you can use it for different purposes, like to set up your washing machine, or to set Fantastic, up your fantastic. dishwasher. Fantastic. And at the same time, आपने यहाँ पे एक door रखा हुआ है, so हाँ that जी, we can maintain the privacy of that thing as well. exactly, तो अगर आप exactly. ये बंद कर देते हो, and at the same time ये जो पूरा आपने long side door रखा है, ये कश्यप जी, हम जितना मेरा understanding है, ventilation में भी मदद करता होगा. Yeah, so all our apartments and the complex is cross ventilated. So अगर आप देखोगे तो right from your kitchen to your living room to your bedroom, ठीक है, and the apartment itself going out to the balcony, पूरी जगह पे cross ventilation है. तो जो हवा जो है वो 24 घंटे खेलती रहती है. Exactly, exactly. जो सबसे important चीज है. So now this, to my viewers, would be the bedroom. Yes. और इस बेडरूम में अगर आप देखोगे तो this is a standard master bedroom with an attached bathroom. Right. And again, if you see, there's a provision for a small loft also just beneath the window. Yes. And on the window area, you also get an extended kind of a soft balcony or a dry area. Correct, correct. करेक्ट. अगर आप चाहो तो आप अपने एसी का आउटडोर रख सकते हो. Exactly. या फिर आप उसको गार्डनिंग के हिसाब से यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने ड्राइंग एरिया के हिसाब से यूज कर सकते हो. And as we can see, all the plug points, all the electrical holes have already been taken care of. Already been taken care of. And this, when I say semi-furnished, the builder goes up to the extent of providing a false ceiling as well in the sample flats, as you can see. Fantastic. Here you can see there's a false ceiling which is already provided. Absolutely, which is already taken care of. Which is already taken care of. And is this the attached bathroom that we were talking about? Yes, this is the attached bathroom. It comes with the basic necessities and basic fittings of the basin, of the taps, of the shower, and of the or the WC components. Right. So this is what we are talking about. Just to show to my viewers, sure, this is what we have. And there's also one important provision that the builder has taken care of, is that in every can say washroom, you have a tank storage space available. Yes, I think this is what we're talking about. Yes, exactly. So you can use it for fitting some extra tanks for storage of water in case you want to water, just in case. Yeah, just in case you want to preserve. Yeah. Power cut ho ya koi problem exactly. ho, time ke liye we can do it. And well, power cuts are very power cuts, if I will say that the building itself, from an infrastructure, it has got a partial power backup for the essences, for the necessities, जैसे कि lift बोलिए, light बोलिए, street lights बोलिए, building complex है, so they are covered by the power backup. Power backup है उसमें. और अगर आप इसमें वाटर का अगर आप बोल रहे तो यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, ये दिस इज ऑल दी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पानी का बोलिए, लाइट का बोलिए, या बिजली का बोलिए आप, तो यहाँ जो रेगुलेटरी बोर्ड है VVMC, दैट इज वैसे विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, ये जो कॉर्पोरेशन है ये मैनेज करती है कि ये जो नेसेसिटीज है वाटर की, लाइट की, सारी अप्रूवल्स एंड कंटिन्यूटी जो होती है पानी की बोलिए आप या बिजली की, ये वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं. तो इट इज ऐसा बहुत कम हुआ है या ऐसा कोई मेगा कैलामिटी होना चाहिए कि आपको यहाँ पे पानी या बिजली ना मिले. आई अंडरस्टैंड. इट हैज टू बी अ नेचुरल कैलामिटी की लाइक हाँ सब जगह पे नहीं है, या कोई पावर स्टेशन टूट गया है ऐसा कुछ, तभी बिजली चली गई है. तो ऐसा सिंगल पॉकेट्स में तो होता नहीं है, लेकिन हाँ कोई नेचुरल कैलामिटी आई है कि तो बियॉन्ड कंट्रोल, दैट्स बियॉन्ड कंट्रोल. एग्जैक्टली. सो कश्यप जी, ये सेटिंग जो हम देख रहे हैं, ये पूरा सेटिंग ऑटोमेटिकली साथ में ही आ रहा है अपार्टमेंट? साथ में ही आ रहा है. यस, बेसिक इसमें सेमी फर्निश्ड में. जी, सेमी फर्निश्ड में वो सब आ जाएगा. फैंटास्टिक. सो दिस इज व्हाट द बेडरूम लुक्स लाइक. वन मोर टाइम, अगर हम बाहर जा रहे हैं, सो ये एक कॉमन बाथरूम है. इफ आई
हाँ जी, showing my viewers. This is the common bathroom, जो कि again एक fully functional washroom है. It is not just a एग्जैक्टली, wash basin, but जैसे मैं दिखा सकता हूँ अपने viewers को, ये एक total bathroom है. एंड जैसे कश्यप जी कह रहे थे, इस बाथरूम में भी एडिशनल वाटर स्टोरेज के लिए एक टैंक रखने का जगह बनाया गया है. हालांकि अगर कोई चाहे तो इसे लॉफ्ट के हिसाब से भी यूज कर सकता यूज होगा. कर सकते हैं, करेक्ट. सो क्योंकि दोनों एब्सोल्युटली, बाथरूम में अगर नहीं चाहते वो टैंक बिठाना, तो दिस कैन बी यूज्ड एज लॉफ्ट. So this can be used as an additional space. And of course, you can see the size of the toilet. You can see the size of the washroom, which is pretty decent. And the best part about this is, जब आपके घर में कोई आ रहा है, you do not have to take everyone to your personal washroom, जो कि हम में से बहुत लोग पसंद नहीं करते. So we do not have to entertain everyone in the internal bedroom attached bathroom. But for that, for guests, we have this provision available. Uh, so before we, if of course, to my viewers, if you have any questions regarding the property, regarding the services, regarding the area, you're more than welcome to raise your questions with me. I will try to get it sorted. I would like to get it answered as I have Kashabji with me. But I would तो also like to give a final tour of the entire property to my viewers. yeah, sure. Just to interrupt you, sorry to interrupt you, जी 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 sir. कश्यप जी. हाँ, तो we also have like no like अगर आप ये अपार्टमेंट देखते हो तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस जो हैं, ठीक है, हमने जो ऑप्शंस रखे हैं इट्स लाइक फॉर अ लग्जरी एज वेल एज फॉर अ बजट कस्टमर. दो जी तरह के कस्टमर्स हमारे पास आ सकते हैं, जिनका बजटेड ही है, और जो एक बजटेड इस कॉम्प्लेक्स में आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जीना सकते, लिटिल मोर स्पेशियस, ठीक है. जी. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर्स बजट. तो 1 बीएचके में भी हमारे पास बजट वाला वर्जन है और लग्जरी वर्जन भी है. ओके. 2 बीएचके में भी हमारे पास बजट और लग्जरी के वर्जन्स हैं, ठीक है. फैंटास्टिक. इसमें क्या होता है कि जो स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं, सो समटाइम्स लाइक इफ people who would come with a nuclear family, people who would come with a multi family kind of जी background. So depending upon a consumer's budget, depending upon the person's luxury taste जो है, तो हमारे जी. पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं. फैंटास्टिक. In terms of areas, अगर आप देखोगे, so like 1 BHK का area like 380 है, then 416 है in terms of carpet. 2 BHK का like 500 है, 591 है. And when I'm talking about carpet, is purely the RERA carpet area actually. Of course. So it doesn't include the balconies, it doesn't include the other free Additional area, spaces additional space right. जो होती है. Right. Now, if you take, again, as you said, from the balcony, from the lift to your, if you're taking a lift apartment, then you get a provision for a privacy much more. So that is a kind of a luxury setting again. Absolutely. So, like Absolutely. so you get a private in kind of a porch outside your flat. Wonderful. So कश्यप जी, इस प्रॉपर्टी में हम जो जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो दिस इज ओनली फॉर 1 and 2 BHKs. 1 and 2 BHKs, exactly. ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, it is only designed for 1 and 2 BHKs. Okay. Fantastic, fantastic. So that I think informs my viewers thoroughly. आपने पूरा चीज एक्सप्लेन कर दिया. Obviously, coming to the final question, अगर आप हमारे viewers को थोड़ा help करें about understanding the pricing, which of course is the last thing that we have. Sure. So now pricing के हिसाब से अगर आप देखोगे, so like now I'll be talking of like a 1 BHK standard apartment जो आपने देखा है, that comes for roughly about say 34 lakh 15,500, which is the basic flat value, excluding any stamp duty, registration or government taxation. Okay, fantastic, fantastic. And the society charges and all are not included in this, which is a very nominal thing. Okay, so that's not something to be worried about. Yeah. So, but the basic flat cost, as I said, was 34 lakhs 15,500 for this 1 BHK. Fantastic. And definitely, yes, from a negotiation perspective, it can be negotiated on a case-to-case basis. Of course. So that's an open for negotiation status. That's a very important point for my viewers to understand. कश्यप जी, एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, if अगर कोई अभी प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं एंड 2 साल बाद अगर वो उसे सेल ऑफ के वजह से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड रेट ऑफ per square feet value? Well, I would say from an estimated profit
square feet value, it should appreciate, anywhere. So suppose you're buying at an average price of close to about, say, 4,000, or 4,900 per square feet. The Okay. appreciated value can go up to, say, about 7,000 square feet. Up to Fantastic. 6,500, yeah, 6,500 to 7,000 is approximately what I am Fantastic. looking at. Fantastic. So I think that really answers the question that we had today. So far, what we had. To my viewers, just to summarize the entire discussion that we had so far, primarily location wise, विरार आज के डेट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सोचो या रेजिडेंशियल पर्पस से सोचो, is one of the key areas to consider. Commutation के point of view से अगर आप देखें तो metro is upcoming, locals are always there, and highways are always available. Second of all, it is a growing area with tremendous focus from the government of converting this into one of the second hubs, residential hubs in the future. जिसके वजह से investors, जिसके वजह से government point of view, government focus बहुत strong है इस area में. सेकंड ऑफ ऑल, ऋषभ जी से जैसे बात करते करते हम लोगों को कश्यप जी से बात करते करते ऐसे समझ में आया कि दिस इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेस फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, जहाँ पे बहुत सारे फैमिली ओरिएंटेड लोग रहते हैं विद अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, किड्स, senior citizens at their places. We have hospitals, we have schools, we have colleges, we have shopping malls, we have amusement places. So basically, that area can fulfill all the requirement of a family person, of a family. The other thing was when it comes to recreation, Virar comes to a nodal point from where you have several beach areas that you can travel to, one day picnics, a night over, traveling. इसके अलावा भी जब आप बाहर की तरफ जाना चाहते हो, आउट ऑफ बॉम्बे जाना चाहते हो, विरार से ट्रैवल करना आपके लिए इजी हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू ऑलरेडी एट एन एक्सटेंडेड पोर्शन. सो वहां से आपको बाकी कवर करने में ज्यादा कम टाइम लगता है, एंड यू रीच दैट प्लेस. सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो प्रॉपर्टी हमने आज देखा, जो प्रॉपर्टी हमने आपको दिखाया आज, that is of course one of the 1 BHKs, and that is just tip of the iceberg to my viewers to help give you an understanding. ऐसे multiple properties विरार में कश्यप जी हैंडल करते हैं. उमंग प्रॉपर्टीज is one of the famous names, one of the key players in that locality. Therefore, they have multiple options, a lot of variety of properties, a lot of different rates that you can get. As Kashyap ji himself explained, कि एक प्रॉपर्टी हम आपको दिखा रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इसके ऊपर इसके सिमिलर कई सारे और प्रॉपर्टीज है, कई सारे और प्रोजेक्ट्स में ऐसे प्रॉपर्टीज है. सो टू गेट all that information, obviously one session will not suffice, but to cater to that requirement, what I would suggest is I am sharing all the contact details of Umang Properties. You have the contact number 90218959199. You can also drop an email at umangproperties31@gmail.com. जो भी क्वेश्चंस आपके थे, जो भी क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे, इनको क्लैरिफाई करने के लिए आप डायरेक्टली उमंग प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करें. आप आगे चल के कश्यप जी से या उनके और कॉलीग्स से वहाँ पे कांटेक्ट करके बात करें. आप जितना हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करें. जब भी आपको सही ड्रीम प्रॉपर्टी जो आप ढूंढ रहे वो मिल जाए, उसको असिस्ट करने के लिए every stage of your transaction, Umang Properties will be there to help you on that. We spoke to Kashyap ji and he has been more than kind to help us understand every step of that locality, the property, the benefits, the USPs, everything. So, Kashyap ji, thank you very much for sharing all the information. And I would like to thank all my participants for finding some time joining us today for such a wonderful event. Thank you, Kashyap ji, again. Thank you so much. It was a pleasure. And dhanyawad. Thank you, sir. Thank you. So with this, I would like to end the session. And for any further questions, any further suggestions, any further query, please contact Umang Properties directly. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Have a good day. Bye-bye.